अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जिस डिवाइस के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा उसका नाम है Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed। और इसके इंट्रोडक्शन से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें गैजेट टेक रिव्यूज़, ताकि आने वाले नए वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इस मोबाइल डिवाइस के बारे में हम डिटेल में स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed. Release 2022, the 27th of December, 181 grams, 7.9 millimeter thickness, Android 13, MIUI 14, 128 gigabytes, 256 gigabytes storage, no card slot in 671080 times 2400 pixels, 108 MP 2160p 6, 12 gigabytes RAM Snapdragon 778 G5 G5000 mAh network technology GSM, CDMA, HSPA, CDMA 2000, LTE, 5G LUNCH announced 2022, the 27th of December status available. Release 2022, the 27th of December BODY dimensions 162.9 times 76 times 79 millimeter 6.41 times 299 x 031 in weight 181 grams 6.38 ounces SIM dual SIM nano SIM dual standby IP53 dust and splash resistant display type old 1B colors 120 Hz Dolby Vision HDR10 plus 500 nits type 900 nits HBM size 6.67 inches 107.4 square centimeter approximately 86.8% screen to body ratio resolution 1080 times 2400 pixels 29 ratio approximately 395 ppi density platform OS Android 13 MIUI 14 chipset Qualcomm SM7325 Snapdragon 778 G5G 6nm CPU octa-core 1 times 2.4 GHz Cortex-A78 and 3 times 2.2 GHz Cortex-A78 and 4 times 1.9 GHz Cortex-A55 GPU Adreno 640 2-liter memory card slot no internal 128 GB 6 GB RAM 256 GB 8 GB RAM 256 GB 12 GB RAM UFS 2.2 main camera triple 108 MP f1.9 wide 1.52 0.7 m PDAF 8 MP 119 ultra wide 4 1.12 m2 MP f2.4 macro features LED flash HDR PANORAMA video 4K 830 fps 1080p 830 60 120 fps 720p 896 0 fps gyro eyes selfie camera single 16 MP wide 13.06 1.0 m features HDR video 1080p 830 60 fps SUND loudspeaker yes with stereo speakers 3.5mm jack yes 24 bit 192 kHz audio comms WLAN Wi-Fi 802.11a B G N AC 6 dual band Wi-Fi direct Bluetooth 5.2 a 2dp LE positioning GPS L1 GLONASS G1 BDS B1I plus B1C Galileo E1 QZSS L1 NFC yes infrared port yes radio unspecified USB Type-C 20 OTG features sensors fingerprint side mounted accelerometer gyro proximity compass battery type LiPo 5000 mAh non-removable charging 67W wired PD 3.0 QC3 plus MISC colors black blue green price about 230 EUR। अब हम इस फ़ोन की पिक्चर्स को डिटेल में देखते हैं। और अगर हम इस फ़ोन की स्पेसिफ़िकेशन के बारे में बात करें तो इसमें फ़ोन में स्पेसिफ़िकेशन के लिहाज से बहुत अच्छी स्पेसिफ़िकेशन दी गई हैं। जैसे स्क्रीन साइज़ काफ़ी बड़ा है इसका दिया गया, जो Xiaomi ने दिया है 6.7 इंच स्क्रीन साइज़, बहुत बड़ा स्क्रीन साइज़ है। और इसके जो बॉडी रेशो और पिक्सल्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे दिए गए हैं।
और आगे बात करें तो हम इसके कैमरे की बात करें, कैमरा भी 108 मेगापिक्सल का दिया गया है, वो भी बहुत अच्छा उसके पिक्सल हैं और उससे अगर आप अच्छी पिक्चर्स भी बना सकते हैं और वीडियोस भी कैप्चर कर सकते हैं, अपनी मेमोरीज़ को कैप्चर करके देख सकते हैं, उससे आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और इसके बाद हम देखते हैं रैम, ये 2 रैम के वेरिएंट में आता है, 6 और 12 GB रैम में आता है और रैम के लिहाज से भी ये बेहतरीन डिवाइस है। और इसमें जो स्नैपड्रैगन का चिपसेट लगा 5G वाला लगा हुआ है, मतलब बेहतरीन न्यू टेक्नोलॉजी वाला चिपसेट लगा हुआ। जो कैमरा बैक साइड पे दिया गया है वो अभी स्टाइलिश और न्यू डिज़ाइन में दिया गया है, ट्रिपल कैमरा दिया गया। और जो इसकी बात करें हम, इसकी मोटाई की बात करें, वो फ़ोन जो इतना मोटा भी नहीं है और इसका वेट भी इतना ज़्यादा नहीं है। और आगे इसकी जो सबसे बड़ी बात है, बैटरी भी काफ़ी अच्छी दी गई है, 5000 mAh की बैटरी लगाई गई है। आपको ये एक अच्छा बैटरी बैकअप टाइम देगा और आपको बार बार चार्ज नहीं करना पड़ेगा, काफ़ी लॉन्ग टर्म बैटरी देगा आपको, कम से कम 2 दिन तो निकालेगा ये फ़ोन। और देखने में अच्छा और स्टाइलिश फ़ोन है, अच्छी डिवाइस दी है Xiaomi ने, एक अच्छी डिवाइस दी है।